हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन पेरेंटिंग के कुछ कॉमन बिलीव्स होते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुने हैं। पर क्या वो सच में सही हैं? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मिथ है, कंपेयरिंग चिल्ड्रन मोटिवेट्स देम टू डू बेटर। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम हार्म होता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उन्हें किसी को भी कंपेयरिंग पसंद नहीं है। आज से 20 साल पहले जब ये होता था तब की बात और थी। कंपेयरिंग में बहुत कम बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन मिलता है। इनफैक्ट इट रिजल्ट्स इनटू मोर रिजेक्शन एज वेल एज रिबेलियस मोड। दैट इज व्हाट आई हैव seen in many of my students as well as even in my child. So comparison inevitable hai. Being humans, it is very very inevitable to compare. Like if I compare myself with someone, or that is a inevitable part. But as a parent, जब हम कंपैरिजन की एकेडमिक बातों की या अचीवमेंट्स की करते हैं तो वो सरासर गलत होता है। बिकॉज हर किसी बच्चे का, जिस तरीके से हम कोई अगर क्रॉप्स की बात करते हैं तो हर क्रॉप का ग्रो होने का अपना एक सीजन है और उसका हार्वेस्टिंग का अपना एक टाइम होता है। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ हार्वेस्ट। इन द सेम वे हर बच्चे का ब्लूम होने का या फिर उसकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप होने का अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। कुछ बच्चे 3 साल में बोलते हैं, कोई 1.5 साल में बोलता है, तो कोई 6 साल में बोलता है। सो ये सारी चीजें, कॉम्पिटेंसीज जैसे जैसे डेवलप होती है, बच्चा उसी हिसाब से चीजों को पिकअप करता है और आगे बढ़ता है। सो कंपेयरिंग इज नॉट एट ऑल द क्राइटेरिया टू मोटिवेट। Yes, you can always share good stories which are motivational without making it as a comparative analysis with your own child. And at the same time, you can always look into this fact that is your child able to do daily some progress, because daily progress or brick by brick building is more important than raising a wall in a day. Parenting ends once a child becomes a teenager. Oh, that's a great myth. को बहुत साल पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती थी, तो हम कन्फ्यूज़ रहते थे। अभी एक्सपोज़र टू इंटरनेट एंड थैंक्स टू ग्लोबलाइज़ेशन एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता होती है। बट एट द सेम टाइम जो बायोजियोकेमिकल चेंजेस उनके बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये सिर्फ़ मुझे ही हो रहा है, ये दुनिया को किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। एज़ अ रिज़ल्ट उनका जो बात करने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, किसी चीज़ों को राय देने का तरीका है, ये सारा शुरू होता है प्री टीन एज से ही। सो एज़ अ साइंस टीचर, व्हाट आई always felt and always perceived that instead of taking it in another way, the teachers as well as the elders should treat it as a normal phenomenon, biological phenomenon, by giving them priorities, by making them responsible for their actions is more important. Because teenage is all about taking, they are neither adults neither kids, they are in between the zone. So sometimes they will make childish some decisions, and they will make childish kind of acts, and sometimes all of a sudden they'll behave in an adult way. So it's better that small tasks you assign them and make them in charge. That gives them a great kind of pride that okay, this is what I am doing on my own, I am the decision maker. Whether it is giving a 100 rupees note and in a shop you are asking them to purchase within that particular limit, that is also authority giving. So teenagers handling is another great this thing which has to be done in a tactful manner. Second very very crucial step for teenager handling is handling the uh, infatuation or the gender biases during this particular age. अब जो मोस्टली ऐसा होता है कि ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड ऑल, एक मीडिया में जाना है, मुझे भी इंस्टाग्राम पे रहना है, मुझे भी स्नैपचैट पे चाहिए, मुझे भी ये चाहिए. सो इफ यू आर नॉट अ डिजिटल पेरेंट, then one should always keep it at a distance. If you are a digital parent, then it is really very very difficult to manage the behavior on screen, because others are not in your control. So teenagers को हैंडल करने के लिए अलग टाइप का पेरेंटिंग चाहिए होता है, जहां पर पेरेंट्स खुद जो है ना वो एक अलग मोड में जाते हैं. वो पेरेंटिंग गाइडिंग के अलावा उनका मेंटरिंग की तरफ अगर रोल आ जाता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स अनदर 4 years the child will be making lot of decisions. They will falter, and when you are standing firmly with your child as a parent, as a guide, that will make them sure that okay, my parent is always there with me. So this will not only ensure that the child is not faltering all the time, but he or she is ready to take up the challenges, deal with them, and going ahead and not giving up. That is what will be the major important challenge for parenting during teenaging days. If my child misbehaves, it means I failed as a parent. This is something which is very
common, and that too, it happens that mostly it comes to the female in the family most of the time. If you are living in a joint family or you are just having a nuclear family, it always come because somehow, because you have been the mother for 9 months, it biologically comes to you that the needle of the compass comes towards you. That's not right, actually. But yes, internally somewhere, I will say partial answer for this, because somewhere down the line, if the child has misbehaved, that means in the past, whenever the things happened, I did not do the corrective measures or the preventive measures. Now I am in a correction mode, but preventive measures, if I would have taken, this particular thing couldn't have happened. So up to some extent, it is right, but not all the time, because sometimes the so-called act or certain things which are labeled as misbehavior may be a different story when you listen from your child's mouth or from another person's perspective. So it all depends on the situation. But yeah, many a times the parents become victim of such kind of phenomenon, and we have mostly seen it in our society as well as in and around us. Partially it is true, partially not. So it's better to be in a preventive mode than in corrective mode. Children should always obey elders without questioning. Yeah, it's a myth. It is not right, because when you are instructing the children like this, that means in a way you are going to diminish their own thinking abilities and their own capacity to question, because in today's world, questioning is one of the crucial factor to go ahead. How to make sensible questions to move ahead, that skill has to be developed rather than curbing the questioning thing. And obeying does not mean that everything blindfoldedly the child has to follow. आज्ञाकारी बच्चा होना अच्छी बात है, सही है, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट आपने कहा है, हाँ ये सही है, और बच्चे को तो धीरे धीरे बच्चे जो है साइकोलॉजिकली आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा कि मेरी माँ या पापा जो कहते हैं वही सही है. सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेनी चाहिए अपने खुद के करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर किसी भी चीज के लिए, वो कभी डेवलप नहीं हो पाएगी, बिकॉज यू हैव मेड योर चाइल्ड कंडीशनड टू योर इंस्ट्रक्शंस, constant instructions, and this ability that you follow me. So you are the leader and he is the follower. So you cannot expect a follower to lead life with dignity as well as with own thought process. So obeying has to be in a different manner, not that verbatim it has to be there. It at the same time, how obeying is to be done and in what cases it has to be done, that has to be taught to the children. And this is something which I don't believe at all, that verbatim that parents have to, the child has to follow. That's not right. Pampering a child is a sign of love. This is something which is a new age parenting's one of the most talked about factor or facet about it, that a lot of pampering is there, and whatever you are asking for, the parents are giving. So it's not the sign of true love. There is these all things, no, like true love, false love, these are all abstract phenomenons. प्यार, चिंता या फिर सहजता, ऐसी बहुत सारी, ये सारी हमारी इमोशनल नीड्स है. पैम्परिंग का मतलब बहुत सारा तरीका हो सकता है. पैम्परिंग अप टू सम एक्सटेंट एक आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन को या ईगो को सेटिस्फाई करता है, आपको अच्छा फील होता है. बट इफ इट एक्सीड्स बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई डिवाइस नहीं है ना, सो हम कोई उसका एक मार्क नहीं सेटअप कर सकते कि आप ये करो तो ये नहीं होगा. इसीलिए पैम्परिंग को ओवर पैम्परिंग में ना कन्वर्ट करना या ना होने के लिए पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस चॉइसेस करने पड़ते हैं और करने चाहिए. as far as my personal views are concerned, no, teaching no for certain things or making a habit of no, to listen, the child is demanding something and you are denying for that, is not a sign of not pampering. It's a clear sign of what is required and what is not required. सो बच्चे को जब आप ना बोलने की या फिर ना सुनने की आदत लगाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे से प्यार नहीं करते हो. पैम्परिंग का मतलब होता है कि आपने, उसने मुंह से बोला कि मुझे 5 किंडर जॉय खाने हैं, तो आपने लाके दे दिया. आप जानते हो कि उसको उस बात की एलर्जी है, फिर भी आप उसको अगर दे रहे हो, तो ये ओवर प्रोटेक्शन है या फिर ये निग्लेक्शन ही है एक तरीके से, क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है. लेकिन आप अगर उसको एहसास दिलाते हो कि ये जरूरी नहीं है, अभी आपको इसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है. So pampering is something which is not at all to be done all the time by bringing materialistic things. Yes, some sorts of pampering,
like say for example you are giving some time, or sharing some good words, or making something, a good dish is prepared and given to the child at home, or some small token of thing is created and given, or some small liberty is given that okay, go out for 1 hour more, or you do that. So such kind of things are okay, not that bringing as and when, or dumping all the things all the time to the child to show that how much do you love that child. Because many a times, because we cannot, when the parents are not able to devote quality time to the child, they keep bringing the things showing that we love you, and that always exceeds towards pampering, and eventually it creates a kind of distance, and a different path is created for the parent and the child bond. So parent pampering is not at all the way for good parenting as well as nurturing a good child. तो ये थे हमारे कुछ कॉमन मिथ्स जिन्हें हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। पेरेंटिंग में परफेक्शन नहीं, कनेक्शन जरूरी होता है, और जब पेरेंट्स समझदारी से गाइड करते हैं तभी बच्चों का रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाता है।